Hello everyone, greetings from Eduphore. Today in this lecture we are going to discuss the long questions of 2019 UPSC mains examination in which you got a question regarding farmers. The question was, how can biotechnology help to improve the living standards of farmers? If you talk about biotechnology, everybody needs to know what actually biotechnology is. Bio means life and technology means the sciences which is required to make improvements in our day-to-day life. Science and technology has played a very important role in adding to the good lives of may it be farmers, may it be agriculture, may it be medicine, may it be health and may it be surgery. Thanks to science and technology which has come forward with great new ideas for improvement in field of agriculture. The biotechnology which is used in agriculture is known as green biotechnology or green technology. Farmers have greatly benefited from this particular technology because it has not only enhanced in increasing the yields of crops, rather than it has also played a much important role in giving great new and better new perspectives and great new ideas by the means of green revolution for the farmers, which has been proving itself as a major boon in the lives and living standards of farmers. Gone are the days when farmers used to go in with their old techniques of farming and cropping. But nowadays, science and technology has introduced many such new methods by which it can not only save the time of the farmer, it can also enhance the yield of the crop by various methods. Today we are going to discuss what are the expected things from the examiner that you need to write regarding this particular question. So when we talk about biotechnology, you need to tell what actually biotechnology means. When various sciences are involved in order to enhance the crop production, to enhance the crop quality. The first example that we are going to deal with here right now is the Bacillus thuringiensis. Everybody knows that Bacillus thuringiensis is a soil bacterium. This is a bacterium which is present in the soil. Can you imagine that earlier farmers used to depend a lot on DDT. Even today farmers are depending more and more on dichloro, diphenyl, trichloroethane. Dichloro, diphenyl, ट्राइक्लोरोईथेन, ये एक ऐसा केमिकल है जो पेस्टिसाइड की तरह प्लांट्स में यूज़ किया जा रहा है. तो क्या ये सिर्फ प्लांट्स को बेनिफिट कर रहा है? क्या हम पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? हैं. तो इस पेस्टिसाइड से एक तरीके से छुटकारा प्राप्त करने के लिए थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी, जिसने इस टेक्निक का पता लगाया कि अगर इस सॉइल बैक्टीरियम को हम यूज़ करें प्लांट्स में तो वो एक बायो फर्टिलाइज़र की तरह या एक बायो पेस्टिसाइड की तरह कैसे काम करेगा. फिलहाल हम पेस्टिसाइड से डील कर रहे हैं, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ बायो पेस्टिसाइड. दिस इज अ सॉइल बैक्टीरियम एंड दिस बैक्टीरियम रिलीजेस अ टॉक्सिन नोन एज बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन मीन्स बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन, दैट इज उसका जहर. ये जो टॉक्सिन है ये बेशक हमारे लिए टॉक्सिन नहीं है, बट इंसेक्ट्स के लिए और पेस्ट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा टॉक्सिन है. अगर ये बीटी टॉक्सिन किसी तरह प्लांट्स और क्रॉप्स के अंदर पहुंच जाए तो वो पर्टिकुलर प्लांट और क्रॉप डीडीटी पर अपनी डिपेंडेंस को छोड़ देगा. दैट मीन्स इफ आई एम अ क्रॉप एंड आई एम यूजिंग डीडीटी टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम पेस्ट, ऑब्वियसली इफ आई एम अ क्रॉप और मुझ पर छिड़का जा रहा है डीडीटी, तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए अगर आप प्लांट्स पर डीडीटी को बार बार छिड़कते रहोगे तो उसका जो केमिकल इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी आएगा. इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बैसिलस thuringiensis का यूज़ हुआ. बीटी टॉक्सिन का यूज़ नॉर्मली कॉटन क्रॉप में बॉलवर्म डिजीज से बचने के लिए यूज़ किया गया और ये इस पर इतना अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ कि बीटी टॉक्सिन के ज़रिए हमने बीटी राइस, बीटी वीट एंड बीटी ब्रिंजल जैसी चीज़ों को भी सक्सेसफुली अचीव कर लिया. बीटी का मतलब है बैसिलस thuringiensis और उसके अंदर रिलीज होने वाला बीटी टॉक्सिन विच इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉइजन. सपोज देयर इज अ प्लांट एंड यू आर पुटिंग BC, दैट इज द बैसिलस thuringiensis, पर्टिकुलर बैसिलस इन दैट, और ये बैसिलस ने अपना टॉक्सिन रिलीज करते ही प्लांट के अंदर छा जाना है. प्लांट की बॉडी अब खुद
एक बायोपेस्टिसाइड बन चुकी है, उसके बॉडी के अंदर ये बायोपेस्टिसाइड रिलीज हुआ। बायो इसलिए क्योंकि इसका कोई भी केमिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं होगा। Bt toxin infects the gut of the insects and thus the insects try to stay away from these crop plants. Now let's continue that what has this particular Bt helped, how it has helped in enhancing the living standards of farmers. Farmers can easily make a good crop yield with the help of this biopesticide, and thus the increase in crop yield can automatically increase their economic benefits also. Now let's come to another boon of biotechnology regarding agriculture, that is how biotechnology has increased the shelf life of certain plants. Let us talk about the tomato first. Everybody knows that if tomato needs to be consumed properly, you need to pluck it from the field or from the particular crop plant when it is green. By the time it reaches your table, it will become red. It will take slow time for ripening. Okay? तो ज़रूरी है कि टमेटो जो है वो कच्चा तोड़ लिया जाए ताकि जब तक वो आपके टेबल तक पहुँचे वो राइपन हो जाए। अब अगर ये टमेटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए तो आपको इसे इसी तरह से अनराइप तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने अनराइप तोड़ भी दिया है तो ये आपके टेबल तक पहुँचते पहुँचते इसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज रहेगा। आपको इसको जल्दी जल्दी कंज्यूम करने की टेंशन नहीं है। एक्चुअली टमेटो में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज ये एंजाइम क्विक राइपनिंग करवा देता है टमेटो की, मतलब द ग्रीन टमेटो टर्न्स रेड ड्यू टू दिस एंजाइम। ओके, बायोटेक्नोलॉजी ने इस एंजाइम को इनएक्टिव करने का प्रोग्राम बनाया। दैट मीन्स थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने अगर इस एंजाइम को इनएक्टिव कर दिया, अगर इस एंजाइम को इनएक्टिव कर दिया जाए तो टोमेटो का शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगा और वो आपके फ्रिज में और आपके स्टोरेज सेक्शंस में पड़ा पड़ा खराब नहीं होगा। दिस इज हाउ द फार्मर्स अगेन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेक्निक एंड हाउ दिस वॉज डन, एंड अ वेरी गुड वेराइटी फ्लेवर सेवर इज द न्यू वेराइटी ऑफ टोमेटो from which farmers benefited profusely. They benefited properly because Flavor Saver came into demand. Why? Because its shelf life was increased. This is how biotechnology has helped again. Apart from this, not to forget what the examiner expects that you need to write in your answers is about the golden rice. Golden rice, जिसे आप enriched rice भी कहते हो. Everybody knows कि rice is rich in starch. कैन यू इमेजिन, राइस स्टार्च में रिच है तो क्या चावल खाकर आप विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हो? नो, आप कहोगे हो ही नहीं सकता। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको गाजर और हरे पत्ते वाली सब्जियां, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड कैरेट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अगर किसी पर्सन को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो ज़ेरोथैल्मिया नाम की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दैट इज अनदर नेम फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसा पर्सन इस राइस को खाकर इस डिजीज से बच सकता है। वो कैसे? डैफोडिल्स फ्लावर में से बीटा कैरोटीन को एक्सट्रैक्ट किया गया और बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट किया गया रेटिनॉल में। एवरीबडी नोज रेटिनॉल इज विटामिन ए। अब ये बीटा कैरोटीन कन्वर्टेड इनटू रेटिनॉल इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल राइस, what will happen? The normal rice will become very rich in vitamin A, and the person who are suffering from the deficiency of vitamin A, that is they are suffering from night blindness, also known as xerothalmia, can easily get benefited by consuming this particular rice known as the golden rice. Farmers have again benefited from this particular process because the demand for golden rice, the demand for Flavor Saver and the demand for the bio-pesticide is in increase. Due to this, the farmers can easily make utter profits and benefits from these particular biotechnological products. This is how the standards of farmers can be increased. क्या सिर्फ एक मनी ही एक मैटर है जिससे इनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जा सकता है? नहीं, बायोटेक्नोलॉजी ने फार्मर्स के काम को ईजी कर दिया है। तो दे फाइंड टाइम फॉर देमसेल्व्स, दे फाइंड टाइम टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स।
तो वो गए दिन जब फार्मर सिर्फ टॉयल करता है क्रॉप्स में और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता या कुछ इनोवेटिव करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता एग्रीकल्चर में. But thanks to science and technology and the green revolution, which has made things very quicker and added to the aid of farmers, it has added to a good lifestyle giving to the farmers. So this is how you can easily attempt this particular question, which has been there in 2019, and we can expect it anytime in the forthcoming papers. Thank you so much.